sir. प्राची ने बोलना शुरू किया कि नहीं? She started speaking or no? No. अनामिका अकेले अकेले हंस रही है। Sir, Srishti is making me laugh. अच्छा, तो तुम दोनों अकेले अकेले हंस रहे हो सर? तो सृष्टि जो भी सुना रही है सबको सुनाओ तो सब हंसेंगे। No, sir. नहीं कर सकते सर? Nothing, sir. That was nothing. Just ask her कि उसको हंसी क्यों आ रही है. That's all. Okay, no worries, no worries. Okay, so let's begin. क्या किया था कल? The Workmen Compensation Act. Okay, is it Workmen Compensation Act or it is Employees Compensation Act? Sir, it later turned into Employees Compensation Act. Then it came into force. It was Workmen Compensation Act. Okay, so when was it enacted? Sir, 1924. 1924. Okay, an amendment? 2017. 2017. What includes dependents? Sir, in first number wife, then his Widow. There is no word called wife. widow. Widow. Then his legitimate below the age 18 son. Legitimate minor son. Minor son. Sir, I was not getting the word. Oh yeah, so that is, this is what is to be learned, that we may understand by whatever means, okay, but when we are representing, it is the same words, right? Therefore, it is not wife but the widow. Yes. Okay, because wife is married. Yeah. Yes. And it is husband and wife. So when husband is gone, it is widow. Therefore, it is not wife but the widow. Okay. Who next? Then legitimate daughter. Unmarried. Unmarried. Unmarried.
Okay. Then who else? Then his widowed mother. Widowed mother. What does it mean? Like the person who has died, uh, his father also died previously. Then Hmm. his mother is widowed. Correct. So if the mother is a widow, then she will be the dependent of the employee. Okay. Who else? His brother, younger brother. Younger brother. Okay. Any string attached? Major, minor, कुछ है? Minor. Minor. Okay. Then who else? A minor daughter who is widowed. Okay. Married. Okay. Minor daughter widowed or In infirm legitimate son. Infirm legitimate son. infirm legitimate son. What is infirm? Partially or totally disabled or Correct. physically challenged. Okay, great. Whether it is minor or major, if it is infirm, it is dependent, right? Okay. Who else? Illegitimate minor illegitimate son and unmarried illegitimate daughter. Perfect. Perfect. और कोई नाती पोते? Yes. Yes, sir. कभी? When they can be the dependent? Yes, sir. If the parents are not alive, then. So the parents are not alive. Okay. Is it written the same way if the parents are not alive? No, sir. What is written? If the daughter's minor child. That was written, sir. Dead. I didn't remember. Dead. I don't. Yes, sir. I don't remember the Dead dead term. daughter's minor child. Daughter's minor child. Dead daughters. Dead daughters. Deceased. Deceased. Yes. Deceased. The word used is deceased, not dead. Good evening, sir. Join, sir. Very good evening, Ruchi. Yes, sir. I was in office only. I just reached home. My God. They make you work so much. No, sir. This weekend we were working because president visit is there on the 2nd of March. Kaun? Kovind ji? No. President from Stephen Okay. Lucier and Mark from London. So whole team is coming. So we are working. Entire work is going on. My God. Too much of workload. Yes, sir. Just come. Okay. Great. But anyway. So all those who missed yesterday's session, we started on labor laws. And we started with the first act. It was Workmen Compensation Act 1923, and later on which was amended in 2017, and it made Employees Compensation Act 2017. So we worked about this. The act and some of the excerpts I have already posted on the group, which you may read at your convenience. All right. So a quick Fine, sir. recap. You can also refer yesterday's YouTube, okay, for whatever discussions we had during the session. Okay. Sir, So, yes, sir, I have a question. please. Sir, if the employee has got two marriages, a marriage he did by himself and another by family advice or pressure. So then, if anything happened to him, means with employee, or he died, then who will dependent? So then court will decide, or No, generally it is based on the nomination. Court is the last thing to decide. If you read the act, in that act it would have been mentioned when will the matter will go in the court.
मैटर कोर्ट में कब जाएगा वो एक्ट में लिखा होगा. तो it is generally the employee will give a declaration, okay, because as per Hindu Marriage Act you can't have two wives. So by any law or any act you cannot have more than one spouse. Therefore, as per nomination given by the employee, it would have been decided who will get the compensation benefits, right? Yes, sir. Okay, and if you read the act, then it would have been mentioned in under what circumstances the matter will escalate to court. Okay. So the first is labor code, and then if there is no conciliation, it goes to appellate, and then ultimately it goes to the court. But all the matters may not go to the कोर्ट स्ट्रेट अवे. हाई कोर्ट में या कहीं भी सारी मैटर्स की अपील नहीं हो सकती है. कुछ मैटर ऐसी हैं जो लेबर कोर्ट में ही सेटल होंगी कमोट में. ओके, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट इफ देयर आर if there are multiple marriages, who should be the beneficiary? I'll see if I find some case on such such situation. Any caselet if I'll come across, I'll share it with you. Okay. Okay. So then, what are the type of disablements? So partial and total. Partial and total. Okay. So in there also there are two clauses: temporary and permanent. Partial temporary disablement, partial permanent disablement, total temporary disablement, total permanent disablement. So all these four things will not discuss here. It will take a lot of time. All right. So you can take a note of it, do a research, and share. One of you can collect the responses from all the students and then share it with me. Okay. So types of disablement as per Employees Compensation Act 2017. Yeah, Workmen Compensation Act 1923. Partial and total disablement, temporary and permanent. So what does it mean? Okay, and if you can get some examples. Total permanent disablement किसको बोलेंगे? Total partial, total temporary disablement किसे बोलेंगे? Partial temporary disablement किसे कहेंगे? और partial permanent disablement किसे कहेंगे? ठीक है? So any example for this, if you can think and give. जैसे फ्रैक्चर, चोट लगना, फ्रैक्चर. So fracture is what? It is temporary partial disablement. है ना? It's temporary partial disablement. हाथ कट गया, it is permanent partial disablement. है ना? उंगली चार कट गई, that is, it can be permanent but partial disablement. थोड़ा सा कट गया यहाँ पे उंगली में, एक हिस्सा उड़ गया आगे का, it is permanent partial disablement. बाकी पूरा हाथ ठीक है. ये हाथ कट गया, it is total permanent disablement. हाथ कट गए, so it's a total disablement, it's a permanent nature. बराबर? Paralysis हो गया and then recovered, so it is total partial disablement, total temporary disablement. जब इफेक्ट था तब पूरी तरह से आप कुछ नहीं कर सकते थे. But then when you recovered, it started working. Okay, so this way you can find out more examples. Then two more things we spoke about.
out of employment and In the time of employment. no, the wording During are the time of employment. In course of employment. during the course of employment. Perfect. है ना? Out of employment and during the course of employment. What does it mean? While working, if employee get hurt, is during the employment, and out of employment is the employee get. No, sorry. Nanika, out of employment is what? If employee get hurt out of employment work, any work, like he's traveling and he got hurt. No. Out of employment is because of employment. Out of employment means काम करने की वजह से. काम करने की वजह से चोट लगी. That is out of employment. During the course of employment, काम करते वक्त चोट लगी. During the course of employment. Traveling to office in company vehicle during the course of employment. है ना? आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक सेल्समैन हैं, कंपनी के काम से आप बाहर जाते हैं, आप एक परचेजर हैं, वेंडर डेवलपमेंट के लिए बाहर जाते हैं, आप क्वालिटी वाले हैं, सैंपल टेस्टिंग के लिए सैंपल लेके जा रहे हैं, और कुछ हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. काम कर रहे थे, हथौड़ा छटक के पैर पे गिर गया, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आप खाना खा रहे थे, दोपहर में ऑफिस में आए, 2 थप्पड़ मारा, आपका 2 दांत तोड़ दिया, आंख के नीचे काला कर दिया. इज इट आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? दुर्घटना कंपनी में हुआ, मतलब ये कामकाज कंपनी में हुआ, कंपनसेशन के लिए लायबल है? No, sir. Compensation के लिए he is not liable, but it is during the course of employment. But he is not applicable for the compensation. Since it does not justify out of employment and during the course of employment, he is not liable for any compensation. Sir, but during the employment तो हो सकता है ना, because he was in the office that time. In the pretext of the act, during the course of employment means काम करने के दौरान, है ना? और out of employment काम करने की वजह से. तो काम के से झगड़ा नहीं हुआ, काम करते करते झगड़ा हुआ, तो ये सामान मेरा, मैं उठाऊंगा, तूने क्यों उठाया, ये तेरा था मैंने उठा लिया, वो झगड़ा हो गया बिकॉज ऑफ वर्क. बट बाहर कहीं लड़के आए थे आप, उसने बदला उतारने के लिए ऑफिस में आया और दबा दब दिया, 2-4 आंख कान सुझा दिया, और आप गए एचआर के पास में और उसको बोला कंपनसेशन चाहिए. क्यों? फैक्ट्री में हुआ. अरे लफड़ा बाहर करके आए भाई तुम, है ना? सो इसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी, दोनों को निकाल के बाहर करो. ओके, देन so what are the key criteria in this act is, as we said, that it is about who will be the dependent who can claim the compensation, under what conditions a compensation will be payable, and what are the types of disablement, right? Yes? Yes, sir. Okay. So there are other points also, but that you can read at your leisure. Only thing is the calculation of amount of compensation. कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा या क्या मिलना चाहिए. तो कायदा ऐसा कहता है कि अगर
डेथ का क्लेम है, अगर डेथ क्लेम है तो 50% ऑफ द मंथली वेज मल्टीप्लाई बाय द रिलेवेंट फैक्टर, फैक्टर इज गिवन इन द शेड्यूल, या 1,20,000 रुपए जो भी ज्यादा, ठीक है। सो 50% ऑफ द मंथली वेजेस, उसका जो भी महीने का पगार है उसका 50% मल्टीप्लाई बाय relevant factor. So relevant factors are what? Factors are age, number of years of service, type of injury, वगैरह वगैरह। तो इन सब के हिसाब से एक फैक्टर बनता है, दैट फैक्टर इज अवेलेबल इन द शेड्यूल। सो 50% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाई बाय दैट रिलेवेंट फैक्टर, तो जो रकम आएगा वो, या 1,20,000 रुपए जो भी ज्यादा होगा। ठीक है, यस विशाखा। सर जैसे कि ये मतलब हर मंथ मिलेगी, जैसे कि वाइफ है या उसका सन है, या मतलब मंथली मिलेगी कि सिर्फ एक बार? इट इज नॉट पेंशन, इट इज नॉट पेंशन, सो इट इज लंपसम। जो भी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से जो भी अमाउंट बनेगा, इट विल बी वन टाइम पेमेंट इन लंपसम, है ना, इट्स नॉट मंथली। Sir, if the deceased person's monthly salary was 50,000, so 50% of it became 25,000. So that 25,000 will be multiplied by age or by the number of years he's Multiplied by relevant factor. Multiplied by relevant factor. So that relevant factor is given in the schedule कि कितना होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उसका नंबर ऑफ ईयर्स, उसका खुद का एज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज, ये 4-5 फैक्टर को गिन के you arrive at a multiplication factor. Okay, so 25,000 मल्टीप्लाई बाय उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सपोज 1,000 होता है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 जो भी अमाउंट बनेगा वो, या 1,20,000 रुपए, इसमें से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। ठीक है, Yes. सेकंड क्या लिखा है? सर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। क्या लिखा है, पढ़ो। Sir, permanent total disablement result from the injury, an amount equal to 60% of the monthly wages of the injured employee multiplied by the relevant factor 1,40,000 rupees, whichever is more. क्या हुआ मतलब? सर मतलब जो उसका मंथली वेज है उसका 60% मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर लाइक एज और नंबर ऑफ इयर्स वर्कड, और या फिर 1,40,000 विच एवर इज मोर। करेक्ट। सो इस एक्ट का शेड्यूल 4 जो है ना, वो आपको रिलेवेंट फैक्टर बताता है। एक्ट का शेड्यूल 4 विल गिव यू द रिलेवेंट फैक्टर। ओके, so in case of permanent total disablement, the compensation will be 60% of the monthly wage multiplied by relevant factor, या 1,40,000 whichever is higher, है ना, जो भी ज्यादा होगा वो। तो मरने के केस में कम से कम 1,20,000 रुपए, और परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में कम से कम 1,40,000 रुपए। सॉरी, 1,40,000, 20 नहीं। मरने के केस में कम से कम 1,20,000 रुपए, हाँ। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होगा तो कम से कम 1,40,000 रुपए।
ठीक है ना? बट सर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि वो तो डिसेबल हो रहा है फिर भी मान लीजिए काम कर सकता है, तो उसको कंपनसेशन ज्यादा है और मरने वाले को कम है, क्यों? क्योंकि इसको भी जिंदगी निकालना है ना, उसका तो निकल गया है नहीं? So what if he was the only person working, I mean, earning money in his That's family? okay. That's okay. Company is not liable to take care of the family for the lifetime, isn't it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. हमारे यहाँ अगर कोई मेड है या कोई मेड सर्वेंट है, अगर हमारे काम पे आते हैं, कुछ होता है तो हम 1 महीने 2 महीने तक मैनेज करते हैं ना। हम ऐसा तो बोलते नहीं कि नहीं ठीक है जिंदगी भर हम तुम्हारे परिवार को पालेंगे। सो जस्ट टू हैव एन इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिली, these these acts have been made. Okay. And permanent total disablement, the person is alive. Okay. So he'll take some time to recover. Therefore, the compensation is comparatively higher as per the act. Right? The same question Vishakha asked. In this case, will it be only monthly, for only 1 month or for long time? It is only one time. It is a lump sum payment. It is lump sum. तो अगर किसी का सैलरी 50,000 रुपए महीना है, ओके, अगेन वेज वी डिस्कस यस्टरडे कि वेज में कौन कौन सा कंपोनेंट कंसिडर होगा है, क्या कंसिडर नहीं होगा. सो इन कंसिडरिंग दोज डेफिनेशन, इफ समवन इज अर्निंग 50,000 rupees a month, so his 50% of monthly wage becomes 25,000 rupees. एंड मान लो उसके 15 साल या 16 साल हुए हैं, 200 इज द रिलेवेंट फैक्टर. तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ? $50 25,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ? Sir, 5 crore. 50 lakhs. So 50 lakhs. कितना हुआ? So 50 lakhs. 50 lakhs. है ना? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 200. $50 lakhs. Okay. Now there is a question for all of you. Read the act and find out, is there any capping? Is there any capping? Capping का मतलब पूरे 25,000 का 200 गुना या कोई एक लिमिट है उसका 200 टाइम्स. सर लिमिट का मतलब? लिमिट मतलब आपका सैलरी कितना भी हो, लेकिन जब कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम मैक्सिमम ये वैल्यू ही कंसीडर करेंगे. 25,000. नॉट 25,000. आपका पगार 2 करोड़ रुपया भी होगा, लेकिन अगर कॉम्पनसेशन मिलेगा तो कॉम्पनसेशन 2 करोड़ को गिन के नहीं मिलेगा. नहीं. कॉम्पनसेशन के लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट किया होगा. आपका सैलरी कितना भी रहने दो, लेकिन जब कॉम्पनसेशन का बात आएगा तो 25,000, 10,000, 15,000, 8,000 जो भी अमाउंट है, दैट यू रीड इन द एक्ट. आप एक्ट में पढ़ो, ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या? कुछ लिखा है वहां पे कि मैक्सिमम कितना अमाउंट आपका मंथली वेज में कंसिडर होगा, है ना? किसी कंपनी का सीईओ है, उसका महीने का पगार 10 लाख रुपए है. And if there is a compensation to be paid as per this act, so whether the compensation would be calculated on 5 lakh rupees multiplied by relevant factor, or is there any other capping prescribed in the act, that amount multiplied by relevant factor. समझ रहे? No. Sir, I'm not able to understand.
You are not able to understand. Okay. I'll refer another act. There is an act called Payments of Bonus Act. पढ़ेंगे अगली क्लास में कभी. पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट. वो क्या बोलता है कि अगर कंपनी का फायदा होता है ना, तो कंपनी एम्प्लॉयज को बोनस देगी. ठीक है, लेकिन वही एम्प्लॉयज बोनस के लायक होंगे जिनका पगार 21,000 रुपए या उससे कम है. So applicability is 21,000 rupees is the ceiling. इसके ऊपर जिसका भी सैलरी होगा उसको बोनस नहीं मिलेगा. ठीक है. Similarly, in this act also, when compensation is to be calculated, any employee, any worker, anyone can have any amount as a monthly wage. किसी का 10,000 होगा, किसी का 10 लाख होगा. करेक्ट. लेकिन एक्ट ऐसा बोलता है कि आपका मंथली वेज कितना भी रहने दो, whatever amount it is at actual, but the 50% of the monthly wage will not exceed X amount. मतलब जब कॉम्पनसेशन कैलकुलेट होगा ना, तो कॉम्पनसेशन खाली 8,000 रुपए पर मंथ मंथली वेज गिन के ही कैलकुलेट होगा. तो जिसका मंथली वेज 20,000 रुपए है, जिसका मंथली वेज 20,000 रुपए है, उस केस में 50% कितना हुआ? 10,000. 10,000. तो उसको 10,000 पे नहीं बल्कि 8,000 पे कॉम्पनसेशन मिलेगा. क्योंकि सर वो 8,000 उसकी लिमिट है, उसके वो ऊपर नहीं 8,000 सबके लिए है, वो सबके लिए लिमिट है ना. So that is a loss for the employee in that case. That is okay. That is okay. You are not beyond the law. But sir, what I think it varies upon company to company again. That is benevolent that you are doing. I was telling the same thing yesterday, that it is a welfare. It is the welfare. My company says, I'll give you. Yeah, Ruchi. No, sir, it's not like that. Is every company is giving below 20,000 who are earning below 20,000. It depends on their policies as well, I think. There are two different things. One is act. What we're talking about is act. So act has given one ceiling. If there is a compensation as per this act, this is the ceiling. Now, company from its own benevolent can have beyond this limit. Yes, anything can be done. Okay, so in my company, in my previous organization, they were used to give 80 salaries. 80 monthly salary will be the compensation. How much? 80 monthly salary. तो अगर किसी आदमी का पगार महीने का 1 लाख रुपया है, अगर वो if by unfortunately if he dies, his family receives 80 lakh rupees. That is benevolent from the company. As per act, the entitlement can be only 1,20,000 rupees or around that. सर एक क्वेश्चन कि पर इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? इसमें तो लॉस में जाएगी ना कंपनी अगर वो ज्यादा देने लगेगी. ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इन सब चीजों में कंपनी फायदा नुकसान नहीं देखती. ये उसका ब्रांडिंग है. अभी अब कोविड में आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने 3 महीना फैक्ट्री बंद रख के सभी लोगों को पूरा पैसा दिया, है ना. नुकसान है ना. वैसे तो आप काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं देना चाहिए, but then that is a goodwill. Yes, agree? So the best example, Tata, I think. Yes, even my company also paid. In Taj, when the attack was happened, that the case happened, तो उससे बहुत वो सबका किया था.
करेक्ट सो दे टुक केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, दे टुक केयर ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिलीज. तो वहां फिर उन्होंने डिपेंडेंट का डेफिनेशन नहीं रेफर किया. फिर जो भी है, whosoever whatever help is required we will give, है ना. तो कंपनी ने पगार भी दिया, नौकरी से भी नहीं निकाला, 3 महीने खाना भी पहुंचाया. They did everything. So that is benevolent. That is, that is an add-on. It is an addition which is beyond your profit and loss. है ना. हर चीज आपका नफा नुकसान देख के नहीं करते, कुछ चीजें आप करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है ना. You also help your maid, your maid servant, your house servant. आपने किया होगा ना घर में. वो 3-4 months when during lockdown they could not come to your place, you would also have helped them. You would not have thought of it that यार ये बेकार का पैसा जा रहा है, 3 महीने का 4 महीने का, काम पे तो नहीं आ रहे, फिर भी मुझे देना पड़ रहा है. But then you know that no, it is needed. It's you who can help them, right? So similar thing is this is with the act. Act has set the basic line. Act has set basic line. आप 1,20,000 देंगे तो you are okay, you are beyond the act. आप किसी लफड़े में नहीं आएंगे. लेकिन आप भी जानते हैं कि 1.25 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है. 1,20,000 rupees is not a very huge amount. So there are different practices that companies do. Okay, so as I said, that one of my employer previously, they were used to say that in case of any death of any employee, voluntarily every employee will donate 1 day salary. So company will give 1,20,000 rupees as per compensation, but they also understand that 1,20,000 rupees is not a huge amount. Some more additional financial help is required. छोटे बच्चे हैं, aging parents हैं, आप कैसे करेंगे? So then company will have a benevolent fund, या benevolent scheme. So where they will say that voluntarily every employee can donate 1 day salary. तो आपका 1 दिन का पगार कट जाएगा. आपसे पूछ लेंगे कटाना है नहीं कटाना है, चॉइस इज योर्स. तो जितना फंड इकट्ठा होगा कंपनी उतना फंड अपनी तरफ से डालेगी, वो कॉर्पस इकट्ठा करके फैमिली को दे देगी. राइट. In some cases, they say that we will buy a term plan on behalf of the employee. If anything goes wrong with the employee, this is the amount that would be payable to the family. So the company does not save anything on its part. Like in accountancy, I remember we learned something called workman compensation fund. So this fund amount is collected by the employees of the company itself. As I said, there are different methods of doing it. Okay. So in some cases, company will have that reserve. In some cases, company will collect from the employee. In some cases, company will give on its own. मैं हर महीने सबसे 100 रुपया मुझे नहीं इकट्ठा करना है. I'm sufficient enough to shed 1 crore rupee in a year for any such thing. So I'll park that fund. I'll keep that fund in workman compensation fund करके मैं अलग से fund में रख दूंगा. I will not get it from the employee, but I'll manage that fund. Or the other way, as I said, that is benevolent fund. That every month, as and when required, I'll collect from the employees and give it to the person affected. है ना, चिट फंड होता है ना, चिट फंड. आप हर महीने 1,000 रुपए इकट्ठा करते हैं, then you do a lottery, someone get in that month, तो किसी ने 1,000 रुपए दिया, उसको 12,000 रुपए का मिल गया एक साथ ही. Something like that. However, there are certain funds. Labor welfare fund is one such fund where employee contributes once in 6 months, 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees, ऐसा कुछ उसका limit है. And then that corpus is collected and deposited with the labor commissioner. And in case of any such eventuality, amount from that fund can also be utilized. So there is a labor welfare fund, which is again a contribution from the employees, but that amount is very negligible. I think 6 rupees is that amount. Rupees, sir. How much? That is 6 rupees. 6 rupees, sir. 6 rupees, correct. And this is bi-yearly. Every 6 months, you have to deposit this amount with the labor commissioner. अभी 6 रुपया एक आदमी का
you think what is the corpus will be calculated, right? Or accumulated. However, the labor welfare fund will have a huge corpus, सारी इंडस्ट्री से आएगा तो बहुत होगा, उनके पास काफी इकट्ठा हो जाएगा जिसमें से they can compensate, right? So you go through the act and just see, is there any limit? कि जो compensation calculate होगा वो कितने रुपए पे calculate होगा? 50% of the monthly wage can be maximum what amount? I think it is 8,000 rupees a month. That is a capping when we calculate the 50% of the monthly wages. Okay, sir. Okay, but still you just go through and check it again. Schedule 4, it has all the relevant factors. So it's 8,000 only. Sorry? So the limit is 8,000. It's 8,000 rupees, na? So 8,000 multiplied by the maximum relevant factor, whatever it is. Okay. So this is the crux of Employees Compensation Act. Or Workmen Compensation Act or Employees Compensation Act. Right? The other things, you please go through the act. You can have your own notes, the way you wish to understand. In case of any query or concern, you can put up on the group or in other class, we can again discuss it, right? Okay. So now we move on to another important act. Another important act is we talk about, which is critical as far as HR is concerned. There are a few acts which are very critical, and the one which we will be studying now will be one of them. It is the Factories Act 1948. The Factories Act 1948. Now, what is the purpose of this act? What was the reason behind this act? So it is important, as I said yesterday also, that for any act, it is necessary to know why such act came in existence. इसका जरूरत क्यों पड़ा? So जैसे compensation था, it was. Yeah, Ruchi, you're saying something? Okay, just to regulate the compensation in case of any eventuality, there has to be some uniformity. Therefore, that act came in existence. Similarly, Factories Act का purpose क्या था? Why this act came into existence? The basic objective of this act is to ensure the working condition, working hours, and safety of the employees, safety of the workmen. The basic objective of this act is to ensure, or is to regulate, or is to check and
ensure the best working conditions, workmen safety, working hours, and basic welfare facilities for the workmen. That was the basic purpose of this act. फैक्ट्री के अंदर लोगों को काम करने में सहूलियत हो, दिक्कतें ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखा हो, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनके वेलफेयर का मतलब उनकी भलाई के लिए कुछ काम किए जाए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे काम करने की जगह सुरक्षित रहे, कर्मचारी सुरक्षित रहे, उसके काम करने के घंटे तय हो, कौन कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा ये सुनिश्चित किया जाए। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट का जरूरत पड़ा। इसके पहले कैसा था, इसके पहले कोई काम के घंटे तय नहीं, हफ्ते में छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी फिक्स नहीं। जैसे चाल में एक 10x10 के रूम में 12-15 लोग रहते हैं, उसी तरह से एक छोटी सी गाला में छोटे से सेट में 25-30 लोग बैठ के काम करेंगे, ठीक है। कोई बीमार हुआ, खांस रहा है, टीबी है, दमा है, ओके, बट देन नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। ऑक्यूपेशनल डिजीज और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर कोई फोकस नहीं, ओके। तो आजादी के बाद का पहला एक्ट है, 1948 में इनेक्ट हुआ ये, एंड द फोकस वाज टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कमैन, ठीक है। दैट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस। सो नाउ व्हेनेवर देयर इज अ मैटर रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स, वर्कमैन सेफ्टी, वर्कमैन वेलफेयर, है ना, which act you have to refer? You have to refer the Factories Act 1948, ठीक है, ओके। देयर वर सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स, बहुत सारे इसमें बाद में अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए, और अभी जब नया लेबर कोड आएगा तो देन दिस विल बी पार्ट ऑफ दैट लेबर कोड। तो उस लेबर कोड में ये फैक्ट्रीज एक्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी सब एक अलग हो जाएगा, बट जब तक वो इनेक्ट नहीं होता है, जब तक वो गैजेट नहीं होता, तब तक तो हमको इसी एक्ट को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल एक्ट है, उसके अलावा इसमें, इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि स्टेट अपने हिसाब से इसके लिए रूल्स बना सकता है। स्टेट इसमें अपने हिसाब से रूल्स बना सकता है, ऐसा इस एक्ट में प्रोविजन है। सो देयर इज सेंट्रल एक्ट एंड देन देयर कैन बी स्टेट वाइज रूल। सो द उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज रूल, ऐसा हो सकता है कोई रूल हो, द गुजरात फैक्ट्रीज रूल, ऐसा एक रूल अलग से है, द महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल इज अ सेपरेट रूल अंडर दिस एक्ट। उसमें कुछ चीजों को फाइन ट्यून किया हो सकता है, कहीं पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, कहीं पे कुछ रिजिडिटी हो सकती है, रिस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, ओके, एज पर द पावर कॉन्फर्ड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में जिसको जिसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने हिसाब से इसमें कुछ चीजें या कुछ कानून संशोधित कर सकता है, तो वो लोग अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रदेश में उसके लिए रूल बना सकते हैं, ठीक है। हम इसके कुछ की फैक्टर्स देखते हैं। देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स इन दिस एक्ट, टोटल 11 चैप्टर्स इन दिस एक्ट, and I think 120 sections and 3 schedules, 3 annexures, 3 schedules, ठीक है। Which are the other legislation on safety, environment and working conditions? Factories Act 1948, Indian Boilers Act 1923, the Fatal Accident Act 1855, 150 साल पुराना कानून, the Indian Dock Labours Act 1934, Dock Workers Regulation and Employment Act 1948, and the Mines Act 1952. So these are some other acts which are basically on safety, environment and working conditions. We talk about manufacturing process, therefore we refer Factories Act.
ठीक है। माइंस जो है खदानें, उसके लिए अलग से कानून बनाए, माइंस एक्ट 1952, इट इज एक्सक्लूसिव। ओके, देन ऑफिसेस, छोटे गाला, क्लासेस, किराने की दुकान, if you want to bring this also under the act, shops and establishment act, warehouse, logistics. Okay, so where the manufacturing process is not happening, they can come under shops and establishment act. So we will focus on the factories act. As I said, central legislation enforced by the state government. केंद्र का कानून है और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को ये आजादी है कि वो उसको एनफोर्स कराए। इनेक्ट हुआ 1949 में, 1 अप्रैल 1949। 120 provisions spread over 11 chapters, right? As I said, the act empowers the state to make rules to enlarge the scope and objective of the act. Rules are amended from time to time, extended to whole of the India. पूरे भारत में सब जगह एप्लीकेबल है। और फैक्ट्री की डेफिनेशन में जो भी चीज आती है वहां ये एप्लीकेबल है। फैक्ट्री की डेफिनेशन में जो भी चीज आती है वहां ये एप्लीकेबल है। ओके, so now the first question is, what is factory? The first question is, what is factory? फैक्ट्री को किसमें, फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी स्थान जहां पिछले 12 महीने में, it says in preceding 12 months, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 10 या 10 से ज्यादा लोग काम पे थे, और पावर का इस्तेमाल होता है। पावर मतलब एनर्जी, बिजली। फैक्ट्री मतलब ऐसा कोई भी स्थान जहां पिछले 12 महीनों में से किसी भी दिन बिजली का उपयोग करके 10 या उससे अधिक लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है। तो बिजली डायरेक्ट लाइट हो सकता है, डीजल जनरेटर हो सकता है, सोलर हो सकता है, कुछ भी हो। So any premise where in preceding 12 months, any day, 10 or more people, 10 or more workmen with power did any manufacturing activity. ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। The scope of manufacturing is very huge. ठीक है, so that I'll suggest for you to explore. Everything will come in manufacturing. Everything. पैकेजिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, अल्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी चीज को आपने पहली बार बनाया, इट्स मैन्युफैक्चरिंग। आपके पास आया, आपने पैकिंग किया है, मैन्युफैक्चरिंग। आपके पास आया, आपने उसको अल्टर किया, इट्स मैन्युफैक्चरिंग। रीपैकिंग किया, इट इज मैन्युफैक्चरिंग। बाजार से आप पापड़ लेके आते हो कच्चे, उसको आपने अपने हिसाब से पैकिंग किया और बाजार में बेचने जाएंगे। तो अगर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इन दैट केस दिस बिकम्स फैक्ट्री। ठीक है, और एनी प्रीमाइस वेयर इन प्रीवियस 12 months एनी डे 20 or more people without power, विदाउट पावर मतलब किसी प्रकार की ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल किए बिना 20 या उससे ज्यादा लोग अगर कई साल के किसी भी दिन काम कर रहे हैं, so then it is factory. ठीक है,
इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट है इस एक्ट के अंतर्गत कि वो बाकी किसी भी चीज को फैक्ट्री की तरह घोषित कर सकती है। आप आपके घर में पानी का फिल्टर लगाया है, बोतल बना बना के बेच रहे हैं, किसी ने बोल दिया तो कल उठ के हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का कोई विजिलेंस आए और बोल दिए कि भाई ये आपका फैक्ट्री है। सो दैट पावर हैज बीन कॉन्फर्ड to the state government. The act empower the state government to declare all or any of the provision of the act to apply to any place with an objective to secure safety, health and welfare of workmen, even though the worker strength is less than the above cited condition. आपने आपके घर में 4 लोगों को इकट्ठा करके पानी का बोतल भरवाना शुरू कर दिया, उसे आप बेच रहे हो। ठीक है, टेम्पो भर जाता है लोगों घर में रोज, 4 ही लोग काम कर रहे हैं, कोई बिजली पानी कोई बिजली का चीज उपकरण इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऐसा ड्रम में से मग्गे भर के बोतल में कैपिंग करके भेज देते हैं। ठीक है, बट अगर ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो 4 लोग काम कर रहे हैं उनका हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है, तो वो आपके घर को फैक्ट्री घोषित कर सकते हैं और फैक्ट्री एक्ट के सारे या कुछ प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। नाउ व्हाट इज वर्कर? व्हाट इज वर्कर? सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड वर्कमैन इन दिस एक्ट, इट इज वर्कमैन। ठीक है, एंड for this act anybody working in a manufacturing premise is a worker. For hire or reward. Worker is a person employed directly or through any agency with or without the knowledge of the principal employer. Principal employer मतलब जिसने उस काम को किसी दूसरे को करने के लिए बोला है, तो he became the principal employer. मैं अपने यहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए कुछ लोगों को नौकरी पे रखता हूं, तो जिनको मैं नौकरी पे रखा उनके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मैं हूं। ठीक है, so principal employer who is outsourcing the process with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process or in any kind of work incidental to or connected with the manufacturing process. Manufacturing process से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा कोई भी काम करने के लिए जो भी व्यक्ति आपके काम करने की जगह पे है, चाहे वो पैसे लेके या बिना पैसे के, आपकी जानकारी में या आपकी जानकारी के बिना, हर वो व्यक्ति इस एक्ट के हिसाब से वर्कमैन है। Yes. So if there is a guard who is responsible, I mean, for the entry and exit of the workers, will he or be also considered as a part of the manufacturing? Absolutely, absolutely, absolutely. Because he is there because of your factory. है ना, आपकी फैक्ट्री को संभालने के लिए वहां है, इसलिए he will also be a part of your manufacturing process, incidental to or connected with. ठीक है ना, तो गेट के अंदर जो भी है, गेट के अंदर जो भी है वो एक वर्कमैन है, चाहे वो चपरासी हो चाहे जनरल मैनेजर हो, एवरीबडी इज ए वर्कमैन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, देन अनदर थिंग, अनदर कीवर्ड इज ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर के ऊपर हमने कल बात किया था, या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर मतलब मालिक, मालिक या मालिक जैसा, जिसके हाथ में उस प्लांट को, उस मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने की पूरी सत्ता है, ही और शी इज द ऑक्यूपायर।
अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर ऑक्यूपायर है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कोई भी एक पार्टनर ऑक्यूपायर हो सकता है, अगर कंपनी है तो कोई भी एक डायरेक्टर ऑक्यूपायर हो सकता है, अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट है तो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकारित कोई भी व्यक्ति उसका ऑक्यूपायर हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपायर मतलब कौन जिम्मेदार है, ये इतना तामझाम जो खड़ा किया है, उस तामझाम में अगर कुछ भी होगा तो जिम्मेदार कौन, who should be held accountable. So anybody who has the ultimate control of that premise is the occupier. So tomorrow, if Hima starts a chartered accounting consultancy firm, then if anything goes wrong with that firm, who is responsible? Hima is responsible. So Hima becomes the occupier. She may have CEO, she may have CFO, she may have HR head, but in proprietorship firm, she will be the occupier. In case of any violation, she will be held responsible. In case of any safety issue, she will be held responsible. So proprietorship firm, a proprietor; in partnership firm, a partner; in company, any of the director. Then the manager. Manager is a person जिसके ऊपर ऑक्यूपायर ने जिम्मेदारियां दे रखी। मैं तो रोज यहाँ नहीं हो सकता, मेरी गैर हाजिरी में प्लांट ऑपरेशन मिस्टर XYZ देखेंगे। सो मिस्टर XYZ becomes the factory manager. वो चाहे प्लांट हेड हो या नहीं हो, but he would be a designated factory manager. ठीक है, so company will issue form 5 in which it will mention कि Mr. XYZ is the factory manager. कुछ भी हो गया, इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसको धरो? फैक्ट्री मैनेजर को पकड़ो। A person responsible to occupy for the working of the factory, he has to be nominated by the occupier. तो जो कंपनी का मालिक होगा वो बोल देगा भाई मेरी गैराजी में कौन कामकाज देखता है, तो मिस्टर सिन्हा देखते हैं। तो मिस्टर सिन्हा विल बी द फैक्ट्री मैनेजर whether declared or not declared. ठीक है, but as a practice form 5 is issued wherein the occupier declares the name of the factory manager. Okay, तो एक चिट्ठी में लिख के, एप्लीकेशन लिख के वो लेबर इंस्पेक्टर को इनवर्ट किया जाता है कि भाई इस फैक्ट्री के फैक्ट्री मैनेजर मिस्टर XYZ है। ठीक है, इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट। Yes, you are asking something? Yes, sir. Will there be any kind of like voting or stuff done for this manager position? No, no, no. It is nominated, not elected. So generally, either your legal head or someone who is looking after all the plant operations, commercial or technical or kuch bhi ho. So generally they are the factory managers because they take the decision on behalf of the malik. ठीक है ना? Just give me a minute. इसका बैटरी डाउन, एक मिनट है बेटा। You all can take a break of 5 minutes. तब तक मैं इसके कनेक्ट करता हूँ। Okay, sir.
Okay. So definition of factory, definition of workman. Okay. Some other definitions. Since this act talks about working condition, so there are different categories of workmen as per their age.
Okay. So adult section 2A, section 2A, it describes define the word adult. So adult is a person who has completed his 18th year of age. जिसके 18 साल पूरे हो गए, he is an adult. Adolescent is completed 15 year but has not completed his 18 year. ठीक है. Child, the one who has not completed his 15 years. So up to 15 years it is child, 15 to 18 is adolescent, and 18 and above it is adult. ठीक है. Calendar year means period of 12 months beginning the first day of January in any year. This is required. इसका क्या जरूरत है? सृष्टि देख रही है ऐसा ध्यान से, इसको बताने क्या जरूरत है? हम तो आपको पता है कैलेंडर ईयर मतलब क्या है, लिखने क्या जरूरत है? यो नो, क्यों नाराज है ऐसे? नहीं सर, नाराज नहीं. I don't get कि why it needed here. तो इसमें एक चैप्टर है एनुअल लीव विद वेजेस, उसमें एक टर्म है कैलेंडर ईयर. तो किसको साल गिनेंगे? To clarify that, they have defined the word calendar year, that any year, फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी से चालू होने वाला साल और उसके बाद के 12 महीने विल बी द कैलेंडर ईयर. क्योंकि अपना फाइनेंशियल अप्रैल से चलता है, कोई अक्टूबर से सितंबर बात करेगा, कोई फरवरी से अक्टूबर बात करेगा. सो इस तरह के लफड़े ना हो. कोई ज्वाइनिंग से एक साल गिनेगा. मैं आज ज्वाइन हुआ तो आज से मेरा साल शुरू होगा. So to avoid all these conflicts and disputes, they defined calendar year means the period of 12 months beginning with the first day of the January in any year. Section 2D, clause B. Then young person. There is a term called young person that will come in the act in, somewhere in the act. Young person who is either a child or an adolescent. Okay, so anyone who is not adult can be a young person. So who is a child? Child is someone who is below 15 years of age. Adolescent is 15 and 18. Adult is 18. So there can be two broad categories, young person and adult. Young person is someone who is either a child or an adolescent. Adult is someone who has completed his 18 years of age. And in young person, there can be two categories. One can be child, someone who is below 15 years of age, and adolescent who is 15 to 18. There are other definitions also in the section 2. Okay, which you can further read. Okay, the entire reading will be a bit, a little difficult. Chapter 3 talks about health conditions. Chapter 3 of the Act talks about health conditions. So 9 sections, section number 11 से लेके section number 20. Section 11 to section 20, chapter 3, it talks about the health condition. Yeah, health related specifications. Okay.
So section 11, cleanliness. Section 12 talks about disposal of waste and effluents. Section 13 talks about ventilation and temperature. Section 14 talks about dusts and fumes. Section 15 talks about humidification. Section 16 talks about overcrowding. Overcrowding is कितनी जगह में कितने लोग काम करने चाहिए. The act has given all the specifications. कितने बाय कितने का जगह होगा, कितने बाय कितने की जगह में कितने लोग काम कर सकते हैं. लाइटिंग, कितना फ्लक्स होगा, कितना ल्यूमेक्स होगा, कितनी रोशनी होनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन कितना होना चाहिए, पीने का पानी सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर, कितने नल चाहिए, किस तरह का पानी मिलना चाहिए, किस डिस्टेंस पे होने चाहिए, कितने लोगों के बीच में कितना रिसोर्सेस चाहिए. Everything has been explicitly mentioned in this particular chapter. Latrines and urinals, कितने लोग होंगे तो कितने यूरिनल्स चाहिए, कितने लोग होंगे तो कितने लैट्रिन्स चाहिए. For male separate, for female separate. Okay, and for every increase in the number of workers, you have to increase these numbers of urinals and latrines. Section 20 talks about spittoons. Spittoon मतलब थूकने की जगह. तो पूरे प्लांट में कितनी जगह पे spittoons होने चाहिए. Yeah, you can say the dustbin otherwise. ठीक है. Now how it looks like in the act. So what is artificial humidification? Air conditioning है ना, कितना ह्यूमिड होना चाहिए. तो कोई फैक्ट्री ऐसी है जहां पे बहुत एकदम काम प्रोसेस ऐसा है, बहुत गर्मी होती है, बहुत उमस होती है, या कोई जगह ऐसी है जहां पे हमको उमस की जरूरत है, मशरूम फार्मिंग, कोई केमिकल रिएक्शन प्लांट है जहां पे हमको उमस चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी चाहिए 80% 90%. तो कितनी ह्यूमिडिटी एक आदमी ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त कर सकता है, किस तरह से हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन रख सकते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 11 cleanliness, what it says that factory shall be kept clean and free from effluvia arising from any drain, privy or any other nuisance, and in particular accumulation of dirt. The floor of every workroom shall be cleaned at least once every week by washing, using disinfectant, or by some other effective method. Where the floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process, as is capable of being drained, effective means of drainage shall be provided as mentioned. Okay, so everything has been mentioned in this particular act. गीला होगा तो क्या करना है, सूखा होगा तो कब उसको धोना है, कैसे धोना है, खिड़की पर्दे कितने टाइम में साफ करने हैं. और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करने का. देयर आर डिफरेंट रजिस्टर्स. एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर यू द लिस्ट वेयर एज पर लीगल कॉम्प्लायंसेस हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन. कौन कौन सा रजिस्टर, कौन कौन से एक्ट के हिसाब से हमको मेंटेन करना पड़ता है. देन सी पेंटिंग और वार्निशिंग every 5 years, once in every 5 years. So all these things have been mentioned in the act. Disposal of waste and effluent, section 12. Effective arrangement shall be made in every factory for the treatment of waste and effluents. And then uska disposal. State government may make rules prescribing the arrangement to be made under subsection 1, that is upar wala, or requiring that the arrangements made in accordance with subsection 1 shall be approved by such authority as may be prescribed.
तो जहां जरूरी होगा स्टेट गवर्नमेंट नक्की करेगी कि भाई इस तरह का कचरा, इस तरह का घन कचरा कौन लेके जाएगा, आपको उसको किस तरह से डिस्पोज करना है। ठीक है ना? आर यू गेटिंग? ये Yes, सब चीज याद नहीं रहेगी. All the sections you will not be able to remember. What you need to remember is that how many sections, which chapter talks about what are the general provisions. ठीक है? Ventilation and temperature. Now generally all the premises are air conditioned. So this point is already taken care of. In certain processes you will to ensure कि एम्प्लॉय का या वर्कमैन का अनसेफ कंडीशन में काम ना करना पड़े. सो दैट इज वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर. सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम. सेक्शन 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन. यू कैन रीड व्हाट इज रिटन. आवाज नहीं आ रहा है अनामिका? अगर जोर से बोल रही हो तो माइक बंद है. I was reading in, I mean, Okay. for myself only. You can read जोर से भी. So artificial humidification. Yeah. That was your question, na? Yes. Point number 1, in respect of all the factories in which the humidity of air is artificially increased, the state government may make rules. Point A, prescribing the standards of humidification. Point B, regulating the methods used for artificially increasing the humidity of the air. Point C, directly prescribed tests for determining the humidity of the air to be correctly carried out and recorded. Point D, prescribing the methods to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of air in the workrooms. तो कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां पे आपको ह्यूमिडिफिकेशन आर्टिफिशियली करना पड़ता है. जनरली योर नेचर यू हैव ना, क्लाइमेट के हिसाब से ह्यूमिडिफिकेशन है, लेकिन किसी किसी प्रोसेस में ठंडी में भी आपको गर्मी चाहिए, उमस चाहिए. कोई ऐसा कल्टीवेशन है, कोई ऐसा फर्मेंटेशन प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस है. आप घर पे इडली डोसा बनाते हो ना, बनाते हो? तो गर्मी में उसमें बाय डिफॉल्ट फर्मेंटेशन आता है, बैटर में अपने आप फर्मेंटेशन आता है. सर्दियों में इतना फर्मेंटेशन नहीं आता है, तो आपको उसको आर्टिफिशियली फर्मेंट करना पड़ता है. तो या तो आप उसमें सोडा डालोगे, बेकिंग सोडा या इनो डाल के हम उसको फर्मेंट करते हैं. अदरवाइज आप उस डब्बे को धूप में रख देते हो. सो यू पुट इट इन द हीट, सनलाइट, सो दैट इट ग्रेजुअली फर्मेंट्स और वो सॉफ्ट हो जाएगा आपका बैटर. सो दैट इज आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन. तो जहां भी जरूरत है वहां सरकार उसके लिए नियम बना सकती है कि अगर इस एनवायरमेंट में काम करना है तो आदमी कंटिन्यूसली कितने घंटे तक काम कर सकता है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम क्या होगा, वेंटिलेशन के लिए किस तरह के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे. राइट? सो दैट इज आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन. सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट ओवर क्राउडिंग. मतलब कितनी जगह में कितने लोग काम कर सकते हैं. 9.9 क्यूबिक मीटर. ये कायदा लागू होने से पहले अगर फैक्ट्री बनी थी तो 9.9 क्यूबिक मीटर. इसके बाद अगर बनी है तो 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस फॉर एवरी वर्कर. एक आदमी को काम करने के लिए 14.2 क्यूबिक मीटर का जगह होना चाहिए. जमीन से 4.2 मीटर के ऊपर आप हाइट पे काम नहीं कर सकते. Any space which is more than 4.2 meter above the level of the floor. So 4.2 मीटर से ऊपर की अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो that is not considered. So on the ground 14.2 क्यूबिक मीटर, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब एरिया मिला के 14.2 क्यूबिक मीटर का जगह होना चाहिए फॉर एवरी वर्कमैन. मतलब एक के ऊपर एक घुस के काम नहीं करना चाहिए, है ना.
बोलो सृष्टि. Sir, in practical, these things happen like we see always in Indian laws, like there is a law, but not not implication. So in practical, is these things happen? Chapter 10 of this act talks about penalties. Okay. So if it is not implemented, there are penalties. Correct. So the question is, how many factories do actually pay these penalties? 100% factories have to comply. 100% factories have to comply. बराबर. कायदा सबके लिए है ना. रोड पे चलेंगे तो हेलमेट पहनने का ये नियम सबके लिए है. कितनी बार आप पहन के निकलते हो? कितनी बार पहन के निकलते हो? Sir, I don't drive. You don't drive. No, sir. Your parents, Yes, sir. they wear helmet Yes, sir. always. Before the rule, that was not mandatory, but after the rule, now it's mandatory. Okay. बाजू में किराने की दुकान तक जाना होगा तो भी. No, sir, not that. Generally what happens, we use helmet. Generally, I'm not saying that 100%, but generally we use helmet to save penalties. है ना. नाके पे चेकिंग है तो आज हेलमेट पहन के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हेलमेट घर से लेके निकलेंगे, हाथ में लटका लेंगे, ऐसे जाएंगे. पुलिस वाले को देखा तो फटक से पहन लिया. Act is applicable to everyone. Everyone should comply. We don't do it. What happens? You live your life. एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, जान चली गई. अदरवाइज हेलमेट नहीं पहना है, चेकिंग हुआ, हेलमेट नहीं था, पेनल्टी भरना. So sometimes bribes also work instead of penalties. Correct. Then you manage. Okay. So Srishti, I think I have answered your question. Yes, sir. That companies which do not comply, they either manage or pay the penalties. है ना. कानून सबके लिए है, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, गाला हो, कुछ भी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है. अगर आप नहीं करेंगे, जिस दिन चेकिंग होगा उस दिन ये सब नहीं पाया गया, there will be a penalty. On recurring offenses, there can be closure. Carelessness will cause a fatal accidents. है ना. तो करना सबको चाहिए, नहीं करते वो अलग बात. तो जो नहीं करते वो उसका भुगतान करते हैं. कुछ चीजों को मैनेज करेंगे, या कोई एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट होगा, पेनल्टीज आएगा, विजिट आएगा, सो एनीथिंग, राइट. But then act is very specific about certain things. Lighting. So there is an act, state rule होगा, वो बताएगा कितना ल्यूमिनस चाहिए, कितना फ्लक्स चाहिए, कितना रोशनी आना चाहिए. Glare either directly from the source of light or by reflection from a smooth or polished surface, free from obstructions. The formation of shadow to such an extent as to cause eye strain or the risk of accident to any worker. तो ऐसा नहीं कि बल्ब ऐसा सर के ऊपर लगा दिया 1000 वाट का, काम ही नहीं हो रहा है, या ऐसी जगह लगा दिया जहां से परछाई आ रही है, दूसरे आदमी को आंख में दिखाई नहीं दे रहा है. करेक्ट. So all these provisions has been made in the act. और कितना luminous, कितना flux, कितना ट्यूबलाइट, कितना रोशनी, वो respective states के rules में specific किया होगा. Section 18 ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए क्या अरेंजमेंट होना चाहिए. You know, provision
In every factory, arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all workers employed therein a sufficient supply of wholesome drinking water, पीने लायक पर्याप्त पानी. अब आरओ लगाओ, बाहर से बाटली मंगाओ, बिस्लेरी लाओ, एक्वाफिना, या बोरिंग खोदो, पीने लायक पानी होना चाहिए. All such points shall be legibly marked drinking water, पीने का पानी, हाथ धोने के लिए अलग, पीने के लिए अलग, कपड़ा धोने के लिए अलग, है ना. घर में होता है ना, हम आरओ का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के लिए दूसरा पानी इस्तेमाल करते हैं. Yes or no? Yes, sir. Right. Then the distance also, in a language understood by majority of the workers employed in the factory, and no such point shall be situated within 6 meters of any washing place, urinal, latrine, spittoon, open drain, carrying slurry or effluent, or any other source of contamination, unless a shorter distance is approved in writing by the chief inspector, the factory inspector. तो बाथरूम, यूरिनल, लैट्रिन, है ना, पाइपलाइन, ड्रेनेज, उसके 6 मीटर के आसपास पानी पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कंटामिनेट करेगा पीने के पानी. In every factory wherein more than 250 workers are ordinarily employed, provision shall be made for cooling drinking water during hot weather by effective means and for distribution thereof. तो अगर 250 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ठंडा पीने योग्य पानी की व्यवस्था करनी होगी. तो आप वाटर कूलर लगाओ, बर्फ की सिल्ली मंगाओ, रेफ्रिजरेटर लगाओ, जो करना है करो. राइट. Any deviation can cause you penalties. Latrines and urinals कितने होने चाहिए? Sufficient होने चाहिए. नंबर आपके रूल्स में मिलेगा. रूल्स में उसके नंबर लिखे होंगे. In every factory where more than 250 workers are employed, जहां 250 वर्कर्स हैं वहां पे, और बाद में हर 50 पे एक या हर 100 पे एक या हर 200 पे एक, इस तरह का रूल्स में प्रोविजन होगा. मेल फीमेल के लिए अलग, क्लीन होना चाहिए, सैनिटरी मेंटेन होना चाहिए. राइट. So the state government may prescribe the number of latrines and urinals to be provided in a factory in proportion to the number of male and female workers. Right. So इस एक्ट के बेसिस पे हर स्टेट का अपना फैक्ट्रीज रूल होगा और उस रूल में ये नंबर दिए होंगे. हर 250 पे एक, उसके बाद फॉर एवरी 50 देयर विल बी एडिशनल. Okay. Then spittoons, same thing for spittoon also. State government can have the rules कितना होना चाहिए, but to keep the place convenient, health, साफ सुथरा, there has to be sufficient number of spittoons in convenient places. तीसरे माले पे काम करते हैं, पहले माले पे थूकदानी रखा है, कोई नीचे जाएगा नहीं, है ना. वहीं से पिचकारी मारेगा, तीसरे नीचे तक पहुंच गई तो ठीक. तो फैक्ट्री की दीवार जो सफेद रंग की थी सारी लाल हो गई. 3 महीने में अपने आप उसके ऊपर वार्निश या डिस्टेम्पर हो गया ऐसा लगेगा, है ना. राइट. सो दैट इज चैप्टर 3, section number 11 to 20. Chapter 4 talks about safety. Chapter 4 and 4A. Total 20 sections. Section number 21 to 41. This talks about individuals' safety. Section 21 talks about fencing of the machinery. 22 talks about work on or near machinery in motion. तो जो मशीनरी चलते हुए काम करती है, ठीक है, उसके आसपास काम करना है तो क्या प्रावधान है, क्या ध्यान रखना चाहिए.
employment of young person on dangerous machines. What is the definition of young person? Who is young person has been divided into two categories. Can be a child or can be an adolescent. So child is someone who is So child is not allowed. Child is not allowed. Adolescents are allowed. Apprentice Act 1961 that talks about this. Okay. So if you are hiring an apprentice, they are generally 10th pass, and at the age of that 14 से 16 साल की उम्र होती है ना? So as an apprentice, if you're employing, they can be young persons. So उन लोगों को किस काम पे लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, उनके काम करने की जगह, काम करने का टाइमिंग. So employment of young persons. Striking gear and device for cutting of power. For cutting of power. बिजली की आपूर्ति को चालू या बंद करने के लिए तो पैनल लगे हैं, मीटर लगे हैं, गियर बॉक्सेस लगे हैं. उन सब के आसपास काम करने के समय क्या चीजें होनी चाहिए? सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, रोबोट्स, अपने आप स्वचालित मशीन्स, एस्केलेटर्स, है ना, समटाइम्स द लिफ्ट्स, सेंसिंग मशीन्स, केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स. ओके, तो जो ये अपना रुई बनाने का कामकाज है, ठीक है, तो उसका जो कॉटन ओपनर का मशीन आता है, वहां पे बच्चे और महिलाओं को काम करने के लिए प्रोविजंस हैं. तो वो क्या कानून है, क्या कायदे हैं? हॉइस्ट्स एंड लिफ्ट्स, तो माल सामान ऊपर नीचे ले जाने के लिए हॉइस्ट या आदमियों को आने जाने के लिए लिफ्ट. लिफ्टिंग मशीन्स जैसे पुली, हाइड्रा, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स, रिवॉल्विंग मशीनरीज. कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखा होगा, वो मिक्सर आता है ना, ट्रक पे कैसा गोल 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 घूमता रहता है. Those are called revolving machines. अपने आप चलती हैं. They're continuously in motion. या गड्ढा खोदने का एक मशीन आता है टनल बनाने के लिए. A big machine with drills. So revolving machine. Pressure plants. So all these respective sections talks about respective machines or respective operations. Floor, stairs and means of access. चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां वगैरह. Pits, sumps, opening of the floor. कहीं पे गड्ढा खोद कर रखा है काम करने के लिए वगैरह वगैरह. Excessive weight, जरूरत से ज्यादा सामान. Protection of eyes. Precaution against dangerous fumes, gases. आप वेल्डिंग कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, या तेज रोशनी में काम करना पड़ रहा है. Okay, in that case, what are the regulations, provisions in the act? Section 37 talks about explosive or inflammable dust. 38, precaution in case of fire. 39, power to require specifications of defective parts or test of stability. Section 40 talks about the screen is not active. I mean, we are still, I guess I'm still able to see section 21 only. Yes, sir. It's not been seen. No, sir. क्या दिख रहा है? Now it is visible, sir. हाँ, अटक गया होगा. Okay, so section 40, safety of building and machinery. Section 40A talks about maintenance of building. Section 40B talks about appointment of safety officer. ठीक है, तो हर फैक्ट्री में एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए. तो जहां 500 या 1000, डिपेंड्स ऑन द रूल एंड द एक्ट. अगर 1000 लोग हैं तो हर 1000 लोग पे एक सेफ्टी ऑफिसर, और उसके बाद हर 500 में एक. तो पहले 1000 पे एक और उसके बाद हर 500 पे एक. तो अगर 1500 लोग काम करते हैं तो आपके यहाँ 2 सेफ्टी ऑफिसर होंगे. अगर 2000 लोग काम करते हैं तो 3 सेफ्टी ऑफिसर होंगे. ठीक है, पहले 1000 पे एक, बाद में हर 500 पे एक. Who can be the safety officer? It has been also mentioned in the act. A qualified safety officer means what? And then section 41 talks about power to make rules to supplement this chapter. तो इसमें इतना सब तो लिखा है, फिर भी कुछ पॉइंट अगर छूट जाते हैं तो उसको इसके अंदर लेने के लिए
आपको किसको किसको ये अधिकार है कि वो एक कानून बना सकता है. So who has the power to make rules to supplement this chapter? ठीक है. So that is chapter 4 and 4A, safety, section 21 से section 41, right? Chapter 5 talks about welfare. Chapter 5 talks about welfare. Welfare मतलब सुख सुविधा के लिए जो भी इंतजाम करने हैं. 42 से 49, 7 sections. Section 42 talks about washing facilities. हाथ पैर धोने के लिए जगह, कपड़े धोने के लिए जगह. आप काम करेंगे, काम करते करते हाथ गंदे होंगे, आपके कपड़े गंदे होंगे, तो उनको धोने के लिए एक जगह चाहिए. धोने के बाद आपने उनको सुखाने रख दिया. कपड़ा गीला है तो उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए जगह. जब तक कपड़ा सूखेगा आपको बैठने के लिए जगह. सो फैसिलिटीज फॉर सिटिंग. देन in case of minor injuries, first aid applications. First aid appliances मतलब एक occupational health safety room, एक ambulance, first aid kit, basic first aid का awareness to the people. All this comes under section 45. Then canteen. 250 या उससे ज्यादा लोग हैं तो आपकी कंपनी में कैंटीन होना चाहिए. कैंटीन का मतलब ऐसी जगह जहां पे एम्प्लॉय खाना खा सके, कंपनी खाना अरेंज कर सके. इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी बट एज पर एक्ट इट इज मैंडेटरी. शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम. 250 से कम लोग हैं, कैंटीन का प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी खुले में बैठ के खाना खाएगा. आपको उसके आराम करने की जगह, रेस्ट रूम या लंच रूम का प्रोविजन रखना पड़ेगा. अगर आपकी कंपनी में 30 या उससे ज्यादा महिलाएं काम करती, 30 और मोर वर्क फीमेल वर्कर्स या फीमेल एम्प्लॉइज, एक्ट के हिसाब से वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स, तो 30 या उससे ज्यादा फीमेल वर्कर्स हैं तो आपको क्रैच का अरेंजमेंट रखना पड़ेगा. क्रैच मतलब छोटे बच्चों के रहने की जगह. आंगनबाड़ी बोलते हैं ना, आंगनबाड़ी. सर. डे केयर सेंटर सुना है? तो फैक्ट्री के अंदर डे केयर सेंटर. सो ऑल द वर्किंग वुमेन हु हैव चिल्ड्रन from 6 months to 6 years, they can bring their children to the premise so that उनको छुट्टी नहीं लेने पड़े, उनका काम ना बिगड़े. और there will be caretaker who will look after these children in the crèche. So crèche is an arrangement which is mandatory wherever there are 30 female workers, whether married or unmarried. Right? Okay, so act does not say 30 married female या 30 mothers. It says 30 female workers. Because to be a mother, it is not mandatory that you need to be married. Okay, for this act, for the provision of this act, right? So even a single mother, adopted, you can have a child adopted and you can be a mother. So in all such cases, for 30 female, if they are there, crèche is mandatory. And then one welfare officer who would ensure that all these facilities are being provided and are being maintained. Again, जैसा उधर सेक्शन 40 में सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविजन है, ऐसा यहाँ सेक्शन 49 में वेलफेयर ऑफिसर का प्रोविजन है. 1000 लोगों पे एक, और उसके बाद हर 500 पे एक या हर 250 पे एक. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है. What are the specifications? Some of the things: a separate facility for male and female, women and men, separate changing rooms, store rooms, restrooms for male and female,
फर्स्ट एड बॉक्स इक्विप्ड विद प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, क्या क्या होना चाहिए, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर विल टेल. एम्बुलेंस रूम, दैट इज वन स्मॉल OHC, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, जहाँ पे इन केस ऑफ सम से ज्यादा लोग हैं तो कैंटीन, और 150 से ऊपर प्लांटेशन लेबर. Okay, so in Plantation Labor Act, that number is 150. For Factories Act, it is 250. Lunch room where 150 or more are employed. So अगर 150 लोग हैं तो लंच रूम चाहिए, 250 लोग हैं तो कैंटीन चाहिए. कैंटीन मतलब जहां पे खाना सर्व होता है, लंच रूम मतलब जहां आप बैठ के खा सकते हैं. लंच रूम इज अ डाइनिंग एरिया, ठीक है ना. Crèche where more than 30 or more women are employed. Chapter 6 talks about working hours for adults. तो इसमें 51 से 66 sections, 15 sections हैं, which talks about the working conditions. कितना घंटा काम करना है कम से कम दिन में, हफ्ते में, अगर एक्सीड होगा तो क्या प्रोविजंस हैं. वीकली आवर्स, कायदे में लिखा है कि आप एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते. फॉर 1 वीक नॉट मोर देन 48 आवर्स. फॉर ए गिवन डे, किसी भी एक दिन विद इंटरवल विद ब्रेक 10.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि 24 घंटा 2 दिन काम करके 48 घंटा हो गया, बाकी 5 दिन ऑफिस नहीं जाना, है ना. ऐसे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे ऐसा होता है, वेयर देयर इज ए 24 आवर शिफ्ट. सो 24 घंटा काम करेंगे, 24 घंटा छुट्टी, है ना. बट वहां विद अप्रूवल, विद प्रॉपर परमिशन, दिस इज हाउ इट इज डन. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट हैपनिंग. राइट. सो हफ्ते में कितना दिन, हर 6 दिन के बाद 1 दिन का छुट्टी. अगर आप उस छुट्टी के दिन काम करते हैं तो उसका कॉम्पनसेशन, एक एक्स्ट्रा छुट्टी, या उस काम का अतिरिक्त पैसा, मतलब जितना आपने काम किया उसका डबल पैसा मिलेगा. दैट इज ओवर टाइम बोलते हैं उसको. राइट. इंटरवल ऑफ रेस्ट, हर 4 घंटे के बाद आपको एक रेस्ट चाहिए. 9 घंटे से ज्यादा का शिफ्ट होना नहीं चाहिए. ओके. विद इंटरवल इट कैन नॉट एक्सीड 10.5 आवर्स, 10.5 घंटा. नाइट शिफ्ट मतलब क्या, ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट, 3 से 7, 3 से 10, 10 से 2 और 2 से 3, इस तरह का शिफ्ट है 8-8 घंटे का. तो आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं तो कितना ड्यूरेशन का ओवरलैपिंग पॉसिबल है. आधा घंटा ऐसा होगा जिसमें दोनों शिफ्ट के लोग काम करेंगे, चार्ज हैंड ओवर करना है ना. एक पीरियड खत्म होने के बाद दूसरा पीरियड होता है ना, दैट इज शिफ्ट. ओके. कभी ऐसा होगा कि एक प्रोफेसर आएंगे, दूसरे प्रोफेसर ऑलरेडी क्लास में है, तो वो ये जो जाने वाला है वो आने वाले को समझाएगा कि ये बच्चे बदमाश हैं, शैतान हैं, इन पे ध्यान रखना. तो वो 5 मिनट का ओवरलैप होगा, ठीक है. या ये मैंने पढ़ा दिया है, आपको इसके आगे पढ़ाना है. ओवरलैपिंग. एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, अगर आपने अतिरिक्त काम किया है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. तो पैसा कितना मिलेगा, किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है, दैट इज सेक्शन 59. रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, आप 2 जगह एक साथ नौकरी नहीं कर सकते. सेक्शन 60 टॉक्स अबाउट इट. नोटिस ऑफ पीरियड फॉर वर्क फॉर एडल्ट. काम करने के शिफ्ट टाइमिंग्स का इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक प्लेस में शेयर करना होगा, फैक्ट्री गेट पे, आपके ऑफिस के गेट पे, नोटिस बोर्ड पे. सो दैट इज सेक्शन 61. रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स, आपके यहाँ कितने एडल्ट वर्कर काम कर सकते हैं
वो रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सेक्शन 62. सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट आवर्स ऑफ वर्क to correspond with the notice under section 61 and register under 62. तो 61 में आपने जो नोटिस लगाया है, 62 में आपने जो रजिस्टर बनाया है, उन दोनों में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए जो प्रावधान है सेक्शन 63 में लिखे हैं. Exempting rules, section 64. How to make exempting orders, section 65. And section 66. फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन. कौन कौन सी जगह है जहां पे महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, कौन कौन से टाइम है जहां पे महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप महिलाओं को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं. अगर आप करेंगे तो आपको क्या प्रिकॉशंस या मेजर्स लेने पड़ेंगे. ओके. So in section 62, it is, why is it specifically mentioned about adult workers? I mean, if they have employed someone who is below 18 years of age, so that would automatically be counted as child labor. No? So why No. adult? Adult is anybody who has completed 18 years of age. He will be a full-time employee. He'll be working for at least 8 or 9 hours. Therefore, adult worker will be different. Other than adult worker, there can be young person. Okay. In young person, it is either child or adolescent. Child cannot be employed. That will not form his entry in that particular adult register. Adolescent, again, they are either trainee or apprentice who have a separate register to be maintained. Therefore, section 62 talks about only adult workers and nobody else. So then why this rule was there earlier? Anyone who is below 18 years of age, and if he is or she is working somewhere, that would be counted as child labor. No. Anybody who is not an apprentice without proper procedure, if he is working, he is a child labor. Child labor कौन हुआ? आपकी कंपनी में एक ट्रक आया, उस ट्रक में एक बच्चा बैठा है, that is a child labor. आपकी कंपनी में बाहर से चाय आता है, वो चाय लेके छोटा बच्चा आता है, वो आपके यहाँ काम नहीं करता है, काम कहीं और करता है, लेकिन आपकी प्रीमाइस में है और उसका एज 15 साल से कम है, इज ए चाइल्ड. आप एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी अप्रेंटिस को हायर करें, कोई ऐसा बच्चा जिसने आईटीआई किया है, आप उसको एज ए अप्रेंटिस हायर किया. नाउ ही इज बिलो 18 बट टेक्निकली क्वालिफाइड टू बी अप्रेंटिस ट्रेनी. So he is not an adult worker, but he is a trainee, he is an apprentice. So his mention will not be in this 62 register. Correct? So when we say child labor, means any children below 15 should not be there in your premise. In crèche, it is allowed only when it is with parent. And with consent, with information. So employment of young person is also an clause that will come, in another chapter. So chapter 6, this talks about working hours for the adults. It's a huge chapter. You have to take a good time to read this. Chapter 7 talks about employment of young person. Okay, so this entire chapter talks about employment of young person. So child को नहीं रख सकते, young को रख सकते हैं. क्या provisions हैं? Non-adult worker can carry a token. Token is what? Token is one badge. Token is a badge. मालूम कैसे पड़ेगा कौन यंग पर्सन है और कौन एडल्ट वर्कर है? तो जो यंग पर्सन है उसको एक बैज दिया जाएगा, वो बैज हमेशा अपने साथ में रखेगा, which will be an identification that he is a young person or an adolescent. Certificate of fitness issued by medical practitioner. Who is the medical practitioner? Act has mentioned. Section 75 talks about who can be a medical practitioner, who can issue this fitness certificate. This fitness certificate is mandatory for every worker. Okay. For hazardous process, it is twice a year. For non-hazardous process, it is at least once a year. If it is an adolescent, उसको भी फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा. उसका क्या इफेक्ट है? वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन. वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के काम करने के लिए क्या समय होगा?
नोटिस ऑफ पीरियड फॉर वर्क फॉर चिल्ड्रन, रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर, अगर किसी प्रोसेस में है तो, ठीक है. सो व्हेन यू रीड दिस एक्ट यू विल नो व्हाट इज चाइल्ड, व्हेन, अंडर व्हाट प्रोसेस दे हैव बीन एम्प्लॉयड. Section 74 talks about hours of work to correspond with the notice of 72 and register 73. तो चिल्ड्रन या यंग पर्सन को काम करने के जो वर्किंग आवर्स हैं और उसका जो रजिस्टर है वो ठीक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं. 75 पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, कौन करेगा, किसको जरूरत है, कैसे होगा, क्या सर्टिफिकेट बनेगा, सेक्शन 75. 76 पावर टू मेक रूल्स, चैप्टर 8 के सभी सेक्शन के अंतर्गत कानून या नियम बनाने की सत्ता किसको है, कौन बना सकता है, दैट सेक्शन 76 टॉक्स. सेक्शन 77 सर्टेन अदर प्रोविजन ऑफ लॉ नॉट बैड, कानून के कुछ और दूसरे नियम जिसको यहाँ पे हमने अभी निषिद्ध नहीं किया है, जिसको बैर नहीं किया है, आप उसको भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो उसकी सत्ता किसको है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, दैट इज सेक्शन 77. Chapter 8 talks about annual leave with wages. If you remember, हमने पिछले एक सेशन में इसके ऊपर डिस्कशन किया था. 240 दिन काम करेगा तो हर 20 दिन पे 1 दिन का छुट्टी है ना. So annual leave with wages, पूरे साल में आपको पगार के साथ कितनी छुट्टी मिलेगी, उसका क्या नियम कानून है, दैट इज चैप्टर 8. एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, कहाँ एप्लीकेबल है, व्हाट इज एनुअल लीव विद वेजेस, वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड्स, आप छुट्टी पे हैं तब आपको पगार किस तरह से मिलेगा, पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, किन किन परिस्थितियों में आपको आपका वेजेस एडवांस पेमेंट मिल सकता है, मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस, जो हमने पैसा दिया नहीं वर्कर्स को उसका रिकवरी कमिश्नर कैसे कर सकता है, पावर टू मेक रूल्स एंड पावर टू एग्जेम्प्ट फैक्ट्रीज, कौन कौन से फैक्ट्री में ये नियम या ये चैप्टर लागू नहीं होगा वो कौन नक्की करेगा, सेक्शन 84 में लिखा है. इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या नियम बन सकते हैं, कौन बनाएगा, सेक्शन 83 में लिखा है. चैप्टर 9 स्पेशल प्रोविजंस, सेक्शन 85 से लेके 91 तक, these are the special provisions under the Factories Act. What are dangerous operations, what are hazardous process, what are accident, what are reportable diseases, what are power to take sample, and so on and so forth. Chapter 10, this talks about all the penalties and procedures. गलती करेंगे तो क्या सजा मिलेगी, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, what is liability of owner, what is the penalty for obstructing inspector, आपके चेकिंग के लिए आता है, आप उसको रोक देते हो, अंदर घुसने नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया, क्या पेनल्टी लग सकता है. ऑफेंसेस बाय वर्कर, अगर वर्कर ने कोई गलती की है क्या पेनल्टी हो सकती है. दिस इज इन रिलेशन टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट. इस नियम के लागू करने में अगर किसी ने बीच में दखलंदाजी की तो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस में गिने जाएंगे और उसकी क्या पेनल्टीज हैं. पेनल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट, exemption of occupier or manager from liabilities, power of court to make orders, onus as to age, presumption as to employ. Section 100 has been omitted. 99 के बाद में 101 है, सेक्शन 100 इस एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको निकाल दिया गया है. ठीक है, सॉरी. So why section 100 has not been included? न था पहले, उसको ओमिट कर दिया, जरूरत नहीं है. उसमें जो भी प्रोविजन रहे होंगे वो प्रोविजन या तो किसी दूसरे एक्ट में इंक्लूड किए होंगे या किसी दूसरे सेक्शन में अमेंड किया होगा, इसलिए सेक्शन 100 अमेंडमेंट 20 ऑफ 1987 शायद 1987 में उस सेक्शन को उन लोगों ने एबॉलिश कर दिया. ठीक है ना, इसलिए इट इज नॉट देयर नाउ. ओके, सो 101 to 106 लिमिटेशंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस, आप किसको सजा कर सकते हैं,
किसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 सप्लीमेंट्स, ओवर एंड अबव ऑल दिस थिंग्स व्हाट एवर बीन मेंशन्ड, उसके अलावा बाकी सारी चीजें, सर्विस ऑफ नोटिस, डिस्प्ले ऑफ नोटिस, एनुअल रिटर्न्स मतलब इसके जो रिपोर्ट आपको सबमिट करने हो, ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स एंड राइट ऑफ वर्कर्स, पावर ऑफ सेंटर टू गिव डायरेक्शंस, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, ये सारी चीजें चैप्टर 11 में है। ठीक है, एंड 3 schedules are annexures. There are 3 schedules. Schedule 1 talks about list of industries involving hazardous processes. ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो hazardous process के अंतर्गत आती हैं, that is schedule 1. Schedule 2 talks about permissible level of certain chemical substance in work environment. आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर कौन सा केमिकल कितना उपस्थित होगा तो चलेगा, that is schedule 2. and schedule 3 list of notifiable diseases. ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अगर किसी कर्मचारी को आपकी फैक्ट्री में होती हैं तो आपको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बताना अनिवार्य है। ये 3 शेड्यूल हैं और 120 इसके सेक्शंस हैं इन 11 चैप्टर्स। ठीक है, ये सब एक साथ याद रहेगा नहीं। नाउ द असाइनमेंट फॉर यू इज, एक तो ऑलरेडी मैंने बताया क्या असाइनमेंट था, पर्पस ऑफ लाइफ। ना पर्पस ऑफ लाइफ तो बहुत लेट हो गया, किसी ने 2 जन ने बताया खाली कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, बाकी किसी ने बताया नहीं। सर यू सेड कि मंडे को वी हैव टू सबमिट, सो आई थॉट दिस मंडे, टुमारो। आई थिंक तो मंडे चला गया ना, वो तो Okay. सैटरडे का मैसेज था ना, Sir, sorry, सैटरडे या but संडे का था ना, तो आई थिंक वो एक मंडे चला गया, एक मंडे आएगा। I'll share it by tomorrow. You don't have the purpose. No, sir, I have, but I honestly sir, कि हम भूल गए थे। I think Honestly, प्राची ने भेजा, प्राची ने भेजा ना, Yes, sir. और किसी एक दिन ने भेजा। So there are only 2 people who have. Yeah, Adhiricha, she has shared, right. So 2 लोगों की जिंदगी में कुछ उद्देश्य हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। So can we share tomorrow, please, sir? yes, please, sir. Ultimately, जिंदगी में क्या चाहते हो? Which is the purpose of life. Okay, that will goal setting. Okay, that is 1. Number 2. Partial disablement and Correct. total disablement. Perfect. So in the Compensation Act के हिसाब से partial and total disablement, temporary and permanent. ठीक है? That is number 2. Number 3. ये तो छोटी छोटी चीज है ना, ये तीसरा वाला बड़ा है, थर्ड वन इज बिग वन। अब जिस किसी भी राज्य में है, in whatever state you are, just find out factories rule of your state. Factories rules of your state. ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस है ना, उसके विषय विष उस रूल्स में कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे। जैसे एक्ट में लिखा है सफिशिएंट यूरिनल्स, रूल में लिखा होगा सफिशिएंट मतलब कितना, 100 पे 1, 50 पे 1, 200 पे 1, 500 पे 1, दैट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर, तो रूल में लिखा होगा कितने होने चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, वो रूल में लिखा होगा। ठीक है, तो फाइंड आउट द रूल्स, रिस्पेक्टिव स्टेट रूल्स वेरेवर यू आर करंटली, जस्ट चेक
what are the rules of that of Factories Act for that rule, for that state. ठीक है, compile the document, try to compile the document. Okay, if you can do this. So what is the definition? अभी कहीं कहीं कैसा होगा, एक्ट में लिखा है कि फैक्ट्री मतलब 10 लोग बिना पावर के, 10 लोग विद पावर, 20 और मोर विदाउट पावर. ठीक है, कहीं किसी स्टेट में ऐसा होगा जहां पे उन्होंने लिखा होगा कि 5 लोग with or without power can be a factory. Central Act says a factory is a premise where in any one day of the preceding 12 months 10 या उससे ज्यादा लोग और पावर का यूज करके आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है, या 20 या उससे ज्यादा लोग बिना पावर का इस्तेमाल किए भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं. कोई हैंड ऑपरेटेड मशीन है, सिलाई बुनाई कढ़ाई स्वेटर बुनने का काम, नो पावर है ना, ऊन चाहिए और ये अपने को क्या चाहिए, क्या बोलते उसको, बुनाई करते हो, बुनाई की सब छोड़ दिया, रेडीमेड स्वेटर पहनने लगे. कुरेशिया करते थे एक छोटा सा सिंगल निडल वाला एम्ब्रॉयडरी करने के लिए. आजकल की जनरेशन कुछ करते नहीं, खाली व्हाट्सएप, ओटीटी, बस वेब सीरीज. हमारा मेंटल काम ज्यादा, हमारा मेंटल काम होता है ज्यादा. दिख रहा है मुझे, सब वेब सीरीज में जा रहा है मेंटल, ऑल ओटीटीज. तो ऐसी कोई भी काम जहां पे 15-20 लोग लगे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में हो सकता है देयर विल बी अ रूल व्हिच वुड बी अदर देन दीज नंबर्स. ओके, सो जस्ट हाईलाइट whatever you understand from that rule. Okay, and it is which section of the Central Act. Done? कर देंगे? Yes, sir. Great. Yes, sir. Factories Act जो है उसका PDF I'll put up on the group. This presentation I'll put up on the group, but it is more on the self study. है ना? Okay, sir. इतना सब every section in detail we cannot cover in the class. Okay, so self study is important. Or in next class we can have an online quiz based on these two acts, Employees Compensation and Factories Act. है ना? As a quick review, and then we will cover other financial acts like payment of bonus, payment of gratuity, then ID Act, Contract Labor Management Act. तो ऐसे 3-4 एक्ट है जो ज्यादा है ना समझ लेना जरूरी है, बाकी जब काम करोगे तभी काम लगेगा, but you need to understand. Okay, so then we will do it. So till 13 जितने भी classes होंगे I'll be conducting. Okay, and after that again Archana madam will take up. In between अगर मुझे कुछ लगेगा मुझे बताना चाहिए, तो we can have some other extra classes also. So be ready. I'll bore you even after 13th. Yeah? No, so it's not like that. No, it's not like that. Actually, it is like that. No, sir. It's not like मुंह पे that. तो नहीं कह Seriously. सकते, आपके मुंह पे तो नहीं कह सकते ना इसके लिए. So genuinely, this labor law, I mean, I'm finding it interesting to study all these things. It is interesting. It is interesting. Only thing is you can't remember everything. And interpretation varies. What I'll do is, I had a discussion with one of such legal expert, Mr. P.K. Jadia. You can go on my YouTube channel. Okay, so there are around 6 or 7 videos that talks about myths of labor laws. मतलब how the laws are interpreted. So certain questions are there, and then the gentleman is answering those questions which are related to labor laws.
So that is the value addition, over and above whatever we are learning. That will help you to understand, the concepts and basics. Okay. I'll put up all those links one by one on the group also. So please spare some time and go through it. कुछ 15 मिनट का होगा, कोई आधा घंटे का होगा, वो जितना भी ड्यूरेशन का है उसको शांति से कान लगा के ध्यान लगा के सुनो. जितने ध्यान से वेब सीरीज देखते हो उतना ध्यान से ही ये सब देखो. Okay, sir. Sir, that video also, this Factories Act, part 2, episode 3, that one also, I mean. Yes, all of them. Okay. So, session 3 का जितना भी videos है ना, they all talk about different acts. Minimum Wages Act, Bonus Act, Payment of Overtime, Migration Worker किसको बोलते हैं, Factories Act में worker का क्या definition है, ID Act में worker का क्या definition है, how they are different. ठीक है ना? So all these things are there. Some of the information will be available. है ना? So you can go through those videos also, and our discussion is going, right? So if you have any question, please ask. Sir, the yesterday's question, if an employee is deceased or get disabled because of any natural disaster, then sir, organization give compensation or not? So sir, I read it, but I am not confirmed. It is up to government na if natural disaster happens. I did not use the word natural disaster. Sir, any cause which is not related to the organization or something happen out of it, मान लो in the course of employment. See how you should think. मान लो it is you who have suffered. Yes, it is you who have suffered, or you are the HR person and you want the benefit must pass on. How will you put up your point? Case is, there are 5 people working in a field. There are 5 people working in a field. बिजली गिरा, एक आदमी मर गया या पैरालिसिस हो गया या टोटली डिसेबल हो गया, कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? There is no natural disaster. बाढ़ आ गया, बिजली गिरा, इलेक्ट्रिक करंट लगा, चलो मान, बिजली नहीं गिरा, इलेक्ट्रिक करंट लग गया अभी. Now there is no natural disaster. The government will not do anything. You are the HR manager. You have to defend. What will you do? So the bottom line is, the very first thing is whether it is out of employment and during the course of employment. That is the first base. Okay, Akriti? Yes, sir. So what is to be understood is whether this incident is during the course of employment and out of employment. काम करते करते करंट लगा, निपट गया. During the course of employment, out of employment, किसी का गलती रहा हो, but काम करते करते निपट गया करंट लगने से. फैक्ट्री प्रेमाइस में था, out of employment. So then he is eligible. दारू पी के आया और बिजली का खंभे पे चढ़ के तार रिपेयर कर रहा था, करंट लगा, निपट गया. Out of employment? Yes. During the course of employment? Yes. Eligible for compensation? No. Why? Because he was under the influence of drug or alcohol. ये कायदे में लिखा है. ऐसा नहीं दारू पी गया करंट लग गया तो हमको पैसा नहीं देना चाहिए. अगर ये लाइन कायदे में नहीं लिखी तो देना पड़ता, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं कि आदमी पी के आया बिना पिया है. Right? So this is how we need to read or interpret.
So the bottom line is out of employment and during the course of employment. Correct? चलो अब तो घर वाले भी पूछ रहे हैं कितना पढ़ाते हैं सर. बंद करो. Okay. So Akriti, I answered your question. Sir, I got it. ये ऐसा क्यों स्लो मोशन में बोल रही है? Sir, I have. Sir, network problem है क्या? पता नहीं. समझ गया मैं. I'm just. Sir, I have sent the compiled form of that document checklist. Okay. So please check it once. Okay, sure, Akriti, sure. Thank you so much. I'll definitely go through it. Okay. So see you in case we will have any extra classes on short notice. It will be informed. Tell me what is the convenient time. शाम को जमेगा 6:30 बजे के बाद कभी भी. Yes, सबको sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई कॉलेज वर्क एक्स्ट्रा क्लास हॉस्टल कुछ इधर उधर घूमना फिरना और अगर दी नहीं ना College will not open again, I think. it will not Beach open. में, no, beach में they were saying कि college will open, but now again they're saying कि will shift to hybrid mode. Oh wow, again your good time is continue. No, it's not good Sir, time. मेरा कॉलेज तो ओपन हो गया. आकृति परेशान है मेरा बंद नहीं हो रहा है तुम लोग बोल रहे हैं हमारा चालू नहीं हो रहा है. Yes, sir. Offline classes भी चल रही है. Offline classes are going on, but still again there is a doubt कि whether the offline classes should be continued or not. Here also from last week my children's school started. Okay, so they were very happy last week, last Monday when it started. Now they're again happy. परसों छुट्टी है. मैं बोला अरे एक ही हफ्ते में तुमको इतना छुट्टी का जरूरत पड़ने लगा. इतने 2 साल तो छुट्टी मारा. This is how we all react to the situations. Fine then. Thank you so much for patience listening. Thank you so much, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.